Students, now today morning class we completed 9.2 exercise which is related to the addition theorem of the probability, right? Now exercise 9.3 also is related to the addition theorem of the probability. Now what is the addition theorem of the probability? P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. This is called the addition theorem of the probability, right? Now we will start 9.3 exercise which is also related to the addition theorem. Okay? So what is the first question? A bag contains 3 red marbles and 4 blue marbles. So altogether 3 plus 4 कितना हुआ है? 7 balls. 2 marbles are drawn at random without replacement. Without replacement means first एक ball choose करना है, then you should not keep it in again in the bag. Next आपको remaining balls में और एक ball को choose करना है, right? If the first marble is drawn is red, what is the probability the second marble is blue, right? हाँ. 3 red, 4 blue, altogether 7 balls, right? What is sample space now? आपको कितने balls choose करना है? 2 balls, right? So 2 balls choose करना है, but without replacement is the condition, right? So without replacement means first 7 balls में एक ball choose करते हैं आप, right? And जो भी आपने ball choose किया है वो keep aside and remaining 6 balls में और एक ball आप select कर रहे हैं. This is your sample space now, right? Without replacement is the condition, right? And what is already आपने एक ball choose किया है वो red हो गया है, right? Therefore the second ball आप जो भी choose कर रहा है वो blue होने के लिए possibilities कितना है that we have to find. Therefore let A be the event to draw a red ball and second is blue, right? Therefore n of A, so first ball already आपने red choose किया है तो आपके पास कितने reds है? 3 है, उसमें एक choose किया है, right? So next ball आप कोई भी आप choose करने वाला है that should be blue. इसका मतलब आप blue में choose करना है तो कितने blues है आपके पास? 4 है तो उसमें एक choose करना है, right? Therefore probability of the event is equal to favorable units of the event by total sample space. So 3C1 into 4C1 upon 7C1 into 6C1. So find the answer. That is your first question, right? Now second question. A box contains 5 green pencils, 7 yellow pencils. So altogether 5 plus 7 12 हुआ है. 2 pencils are chosen at random from the box without replacement. Same question again. What is the probability that both are yellow? Yes, answer आ गया है. Do it fast. Right? So 5 green pencils, 7 yellow pencils. Altogether 12 pencils we have. Without replacement is the condition. A be the event to choose both yellow pencils is the event. Therefore, probability of the event is equal to n of A upon n of S, right? तो here directly I am taking. तो विदाउट रिप्लेसमेंट किया है. फर्स्ट आपको एक पेंसिल चूज करना है. टोटल पेंसिल्स कितने हैं आपके पास? 12 है ना. सो 12 में एक चूज कर रहे हैं. विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स नाउ यू हैव ओनली 11. इन दैट यू हैव टू चूज 1. नाउ कमिंग टू द न्यूमरेटर दैट इज फेवरेबल केसेस. आपको दोनों पेंसिल्स येलो ही चूज करना है. देयरफॉर व्हाट इज द एन ऑफ ए? यस, टोटल येलो पेंसिल्स कितने हैं आपके पास? 7 है. फर्स्ट उसमें एक चूज करो. बाद में कितने हो गए येलो पेंसिल्स? वेरी गुड, 6 हुआ है. उसमें और एक चूज करो. हो गया है आंसर? यस. सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द आंसर. या थर्ड प्रॉब्लम बाद में करेंगे, ठीक है? या नाउ फोर्थ प्रॉब्लम. फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स 2 cards are drawn at random. Find the probability that both the cards are diamonds when first card drawn is kept aside, second the first card drawn is replaced in the pack. Means without replacement, with replacement are the questions.
right? Read the question carefully and try to solve it. ठीक है? Right. So in this question, what is the information given? पैक में कितने कार्ड्स होते हैं? 52. और डायमंड्स कितने होते हैं? 13. और आपको पिक करना है 2 कार्ड्स and 2 cards are diamonds, right? And the conditions are, first question, first card drawn is kept aside, right? Here directly I am taking probability of the event, which is equal to n of a upon n of s. जो भी फर्स्ट कार्ड आप ले रहे हैं ना, वो फिर से आप बैग में या पैक में नहीं रख रहे. इसका मतलब सैम्पल स्पेस हुआ है फर्स्ट 52 में ये कार्ड सेलेक्ट करो. नेक्स्ट आपके पास कितने हैं? 51 है, उसमें और एक कार्ड सेलेक्ट करना है. तो दिस इज द सैम्पल स्पेस. नाउ इवेंट इज बोथ द कार्ड्स आर डायमंड्स. इसका मतलब 13 डायमंड्स में पहले आपको ये चूज करना है. नाउ फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज केप्ट असाइड. इसका मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट. नाउ आपके पास कितने डायमंड्स है? 12 डायमंड्स है, तो उसमें और एक कार्ड चूज करना है. हो गया है, तो सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द आंसर, राइट? Now, what is the second event? First card drawn is replaced in the pack. Means, yes, with replacement. So, probability of the event is equal to, sample space is 52C1 or 52C2. Yes, first 52C1 ये कार्ड को चूज करना है. देन जो भी चूज किया है वो फिर से पैक में रखिए. नाउ अगेन यू हैव 52 कार्ड्स. अगेन ये कार्ड चूज कीजिए, राइट? नाउ द सेकेंड न्यूमरेटर का पार्ट क्या हो जाएगा? 13 डायमंड्स में आपको ये कार्ड चूज करना है. फिर से वो कार्ड बैग में रखिए और फिर से 13 कार्ड्स है, वो 13 कार्ड्स में एक डायमंड चूज कीजिए, राइट? समझ में आया? यस, सिंप्लीफाई इट एंड यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? A, B and C try to hit a target simultaneously but independently. What is the meaning of this? Yes, Siddhant, Shivam, Samarth are trying to hit a target at a time but independently. समझा? Simultaneously होना है इवेंट, बट तीनों अपने अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने अपने टारगेट को हिट करना चाहते हैं, राइट? 3 इवेंट शुड बी हैपन एट ए टाइम बट सेपरेटली. दैट इज द मीनिंग. देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिटिंग द टारगेट आर, दैट मीन्स सिद्धांत का 3/4 है, शिवम का 1/2 है और सार्थक का 5/8 है. Now find the probability that the target, first question, is hit exactly by one of them. Second, not hit by any one of them. Third one is hit. D, exactly hit by 2 of them. Right? करेंगे अभी. This is the given information, right? Means A, B, C are trying to hit a target independently and the probabilities are given. That is, probability of A is equal to 3/4, B is equal to half and C is equal to 5/2. And in the questions not hit by any one is given. इसका मतलब complement भी चाहिए हमें. तो what I am doing here, I am finding the complement. Therefore, P of A complement is equal to 1 minus P of A, that is 3/4, which is equal to 4 minus 3. 1/4 हो गया है. Then what is P of B complement? 1 minus half means ये न्यूट्रल है, हाफ ही है. और P of C complement 1 minus 5/8. 8 minus 5, 3. 3/8 are the probabilities of not hitting the target by independently. Right? Now, what is the first question? So, first question is target hit by. Either I will write target. Hit exactly by one of them, right? Therefore, let E be the event
that target hit exactly by one of the three or one of them, right? Therefore P of E is equal to क्या हो जाएगा, P of A से होना है, right? Be careful. And B से नहीं होना है और C से भी नहीं होना चाहिए, means complements are P of B से होना है, इसका मतलब A से नहीं होना चाहिए बट B से होना चाहिए और C से नहीं होना चाहिए, और probability of A से नहीं होना चाहिए और B से भी नहीं होना चाहिए, only by C, right? And at the starting clearly they mentioned that all the events are independent events. Independent events मतलब intersection part is nil, there is no intersection part. Therefore if intersection part is not there, then what it will become, P of A intersection B complement intersection C complement हो जाएगा P of A into P of B dash into P of C dash. Our union will become plus P of A dash, P of B, P of C dash plus P of A dash into P of B dash into P of C, right? Now substitute the values. What is P of A? 3 by 4 into P of B complement is 1 by 2, C complement is 3 by 8, plus substitute all the values, right? Now it is multiplication, therefore numerators का product हो जाएगा 3 into 3 9, 4 into 2 8, 8 into 8 64, plus numerator is 1 into 1 into 3 3 हो जाएगा, सेम न्यूमरेटर तो चेंज नहीं हो रहा है, वो 64 ही है, और हियर 5 upon 64. तो ये फेल्स इन डिनोमिनेटर्स आर सेम, ऐड द न्यूमरेटर्स, दैट इज 9 plus 3 plus 5. तो कितना हुआ है, 9 plus 3 12, 12 plus 5 17 upon 64 is the probability of the event the target is hitting exactly by 1, right? Now second question, let same E लेती हूँ मैं, right? E be the event not hit by any one of them. तो ये क्या हो जाएगा, एक बार सोचो. Therefore P of E is equal to any one of them. इसका मतलब A से भी नहीं होना चाहिए और B से भी नहीं होना चाहिए और C से भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? Therefore all the events are independent events. Therefore what we can write, through multiply करेंगे P of B dash into P of C dash. What is A dash? 1 by 4, B dash 1 by 2, C dash 3 by 8. So numerator 3 हो गया, denominator is 64. Now third one is target is hit, that's it. Let E be the event that target is hit, ठीक है? तो what is the second question? Event not hit. Our third question is event hit. इसका मतलब इधर P of E क्या हुआ है, 1 minus P of not hit, that is A intersection B intersection C complement. तो ये हुआ है, ये वैल्यू पूरा 3 by 64 हुआ है, which is equal to 61 upon 64. Now what is the last bit? E be the event
that the target hit by two of them, right? Two persons, that is either Siddhant Sarthak or Siddhant Shivam or Shivam Sarthak, right? Yeah. तो P of E क्या हुआ है? P of A intersection B intersection complement of C union P of A intersection B intersection C, बट कॉम्प्लीमेंट इधर C को दिया है तो इधर B को देना, यूनियन P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बट ओनली 2, तो ये को कॉम्प्लीमेंट देना, बस हो गया. नाउ ऑल द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट? देयरफॉर P of A intersection B can be written as P of A into P of B. Therefore ये हो जाएगा P of A into P of B into P of C complement plus P of A into P of B complement into P of C plus P of A complement into P of B into P of C. Substitute the values, we'll get the answer. Do it. Now what is the product of numerators? 9 upon 64. 3 5s are 15 upon 64. 5 upon 64. 15 plus 5, 20. 20 plus 9, 29 upon 64 is the probability that the event is hit by exactly 2 persons. Correct? So for today's class, last question. Okay? What is the question number 6? The probability that a student X solves a problem in dynamics is 2 by 5 and the probability that the student Y solves the same problem is 1 by 4. Right? इसका मतलब X का एबिलिटी 2 by 5 है और Y का एबिलिटी 1 by 4 है. Think once, these two are dependent events or independent events? Exactly, these two are independent events. Now, what is the probability that, first bit, the problem is not solved. Second, the problem is solved. Third one, the problem is solved exactly by one of them. ठीक है? Right. मैंने पूरा information लिख दिया है. Let A be the event that the student X can solve the problem in dynamics. Similarly, the same thing for B, right? B is the event that Y can solve the problem in dynamics. Therefore, P of A is equal to 2 by A 5 दिया है. P of B 1 by 4 दिया है. Therefore, not hit, not solved by is given. Therefore, complement we required. Therefore, P of A complement is 1 minus P of A, that is 2 by 5, which is equal to 3 by 5. Similarly, P of B complement, that is 1 minus 1 by 4, which is equal to 3 by 4. So, जो already हमने discuss किया है, these two events are independent events. Therefore, intersection क्या हो जाएगा? Multiplication हो जाएगा. Therefore, P of A intersection B is equal to P of A into P of B हो जाएगा. Now, what is the first question? The problem is not solved. इसका मतलब by anyone, right? इधर ये, इधर X और Y दोनों सॉल्व नहीं कर सकते हैं. वो इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करना है. Therefore, let E be the event that the problem is not solved. Therefore, what is the symbolically how we can write? P of E is equal to P of A से भी सॉल्व नहीं होना चाहिए और B से भी सॉल्व नहीं होना चाहिए. Therefore, independent events है तो intersection multiplication हो जाएगा. Now, what is P of A bar? 3 by 5. B bar is 3 by 4. So, 9 by 20 is the answer. Now, second bit. Let E be the event that the problem is solved. Right? Problem is not solved is
9/20. Then problem solved is, yes, P of E is equal to क्या हो जाएगा, 1 minus P of A complement intersection B complement. तो ये हुआ है 1 minus 9/20 which is equal to 20 minus 9, 11/20. राइट, एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करके फिर से लिखो. वाई, बिकॉज इधर भी मैंने ये लिया है, हियर आल्सो आई टुक एज ई ओनली. राइट, मैंने वो इवेंट कंसिडर किया है बस, उसमें और कुछ नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, लेट E be the event that the problem is solved by exactly one of them. Exactly one of by them. तो कैसे लिखा है इन प्रीवियस प्रॉब्लम, हमको P of E चाहिए. दैट इज, अगर ये से सॉल्व हुआ है देन बी से नहीं. यूनियन, अगर बी से हुआ है तो ये से नहीं होना चाहिए. यस, दिस इज द केस एंड वी नो ऑल द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. राइट, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, P of A इंटू P of B डैश प्लस P of A dash into P of B. Now P of A is 3/5 and that is 1/4 plus ये हुआ है 2/5 और this is 3/4. 3/20 plus 6/20 हुआ है 9/20. करेक्ट. प्रॉब्लम इज कंप्लीटेड. तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड टुमारो द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स we will do. Okay, thank you very much and complete the problems in your notebook by after understanding the concept. ठीक है. Yeah.